everyone, welcome you all to the YouTube channel of Radhika Classes. Today in this video we are going to discuss about the various respiratory facts. So before starting, let's recall what is respiration. Respiration involves 5 different steps. Respiration जब हो रही है तो उसमें 5 different steps होंगे. First is breathing. Breathing means inhalation of fresh air and that fresh air enters your lungs थ्रू रेस्पिरेटरी पाथवे. जैसे ही फ्रेश एयर ऑक्सीजन रिच एयर, फ्रेश एयर मीन्स द ऑक्सीजन रिच एयर. ऑक्सीजन रिच एयर जैसे ही लंग्स के पास जा रही है, लंग्स में से लंग्स हैव एल्वेलाई, एल्वेलाई आर सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. तो वहां क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज. ऑक्सीजन मिक्सेस विद द ब्लड, डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड एंड फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन. एंड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन into the blood is exchange of gases, and then that oxyhemoglobin form is transported to various body tissues. Oxyhemoglobin की फॉर्म में ऑक्सीजन बॉडी टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट होगी. आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन इट रीचेस बॉडी टिश्यूज, और जब वो बॉडी टिश्यूज पे पहुंच जाएगी तो बॉडी टिश्यूज को डिसोसिएट होकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या देगा? हीमोग्लोबिन अब रह जाएगा ब्लड में, और ऑक्सीजन इज गिवन टू द बॉडी टिश्यूज. अगेन मीन्स एट टिश्यू लेवल गैसियस एक्सचेंज अक्कर, और बॉडी टिश्यूज से ब्लड में क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या दे देगा ब्लड को? ब्लड क्या दे देगा बॉडी टिश्यूज को? ऑक्सीजन. एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड अगेन इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोमिनोहीमोग्लोबिन और इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेटाइन. मैक्सिममली इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेटाइन वापस एल्वेलाई तक आएगा, वहां गैसियस एक्सचेंज होगा, एंड देन वी एक्सेल आउट द कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर. और उसका ऑक्सीजन का क्या हुआ जो बॉडी टिश्यूज तक पहुंची थी? दैट गेट ऑक्सीडाइज्ड इन अ माइटोकॉन्ड्रिया एंड रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. This is how we respire, and through respiration we get energy. But there are some other facts that are related to the respiration. Today we are going to discuss about these facts. So let's start with the first one. First is vital capacity is reduced. Vital capability to breathe a maximum amount of air reduces during smoking. Vital capacity reduces during smoking. This is the first point. And the second point is in the embryonic stage. बच्चा फीटस है और उसमें डेवलपमेंट हो रही है मदर वूम में एक फीटस की. लंग्स के बनने से पहले गैसियस एक्सचेंज कैसे हो रहा है? तो एम्ब्रियो में बच्चे एक लेयर बनती है दैट इज कॉल्ड कोरियोन. कोरियोन इज अ लेयर इज फॉर्म्ड इन अ एम्ब्रियो ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट. एम्ब्रियो की जब डेवलपमेंट हो रही है और लंग्स नहीं बने हैं, बिफोर formation of lungs, before formation of lungs, lungs की फॉर्मेशन से पहले गैसियस एक्सचेंज कौन कर रहा है? कोरियोन. कोरियोन undergoes gaseous exchange. Chorion undergoes gaseous exchange because oxygen is again नीडेड, क्योंकि वहां पे डिवीजन हो रही है, प्लांट के एम्ब्रियो की ग्रोथ होगी. एम्ब्रियोनिक ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए. फॉर एनर्जी ऑक्सीजन इज नेसेसरी. तो वो ऑक्सीजन कौन कहां गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा? थ्रू कोरियोन. दैट्स व्हाई दिस कोरियोन इज आल्सो नोन एज फीटल लंग्स. हम इसे फीटल लंग्स भी कहते हैं. नाउ द सम बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं. अब यहाँ पे हम there are some terms, basic terminology related to the respiration. First is eupnea. Eupnea means normal breathing rate. Normal breathing rate, a person when you are going to the doctor to check your breathing rate, and if you have a normal breathing rate, that condition is called eupnea. And that breathing rate varies from infant to the adult. जो एक न्यूबॉर्न बेबी है दैट इज इन्फेंट, उसमें जो है ब्रीथिंग कितने हो रही है? 60 times per minute in infant.
normal breathing rate in an infant is 60 times per minute, while it is 30 times per minute in 12 months baby. Okay, a 1 year baby, up to a 1 year infant कब तक है वो? Up to the 3 or 4 months, and then a baby up to the 12 months respire 30 times per minute and 24 times per minute in 2 to 5 years of age. During a childhood growth period, 25 times per minute, and you know adult respire 12 to 16 times per minute in adults, and that is, you know, that is directly proportional to the metabolic rate. Metabolic rate in a newborn baby or in the babies is much higher than the adults. That's why they have the more breathing rate. That's why the old persons also have less breathing rate. They have a problem in breathing rate क्योंकि उनका metabolism slow हो जाता है. And another term is, this is the first term. Second is hypopnea. Hypopnea means decreased breathing rate. This is normal breathing rate. DR here means breathing rate. Hyperpnea is increased breathing rate. Okay. Next is anoxia. Anoxia means increased carbon dioxide concentration. It means it means no oxygen available. When there is no oxygen available for the breathing, then it is called anoxia. No oxygen available. And one more, you know this is a very common term, hypoxia, lack of oxygen. When you move to the hills, then there is a lack of oxygen availability, that is hypoxia. Generally anoxia term is not used, while hypoxia is a very common term that is preferred over the anoxia, because on earth there is a very low condition, low chances, very rare chances of no oxygen availability, while hypoxia, lack of oxygen availability, occurs generally. And the one more term is hypercapnia. This is hypercapnia, that is related to the carbon dioxide concentration when increased. High carbon dioxide concentration is hypercapnia. And one more thing is there, I will write here, dyspnea. This word is generally used in biology for pain. DYSN. This word is used for pain. So here dyspnea means painful breathing. Okay, and the last is tachypnea, is shallow breathing. When you run and after completing your running, you shallow breathe, do the deep shallow breathing, and that deep shallow breathing is called tachypnea, means when your trachea muscles contract continuously to breathe. So these are the various terminology that is used. Let's move to the next, is breathing completes in 5 seconds. One breathing cycle completes in 5 seconds. In this, 2 seconds for inspiration when we inhale air, and this is active process, energy acquiring process, while 3 seconds for expiration, and this expiration is passive process, means no energy is required here. And in birds and chameleon, they have double respiration. They follow double respiration, just like human beings have double circulation
and these birds and chameleon have double respiration, means one respiration completes after 2 inhalation and 2 exhalation. Why it occurs? Because they have lung sacs. Due to presence of lung sacs that we always receive fresh air, जो कि हमेशा fresh air receive करेंगे, and their breathing cycle completes after 2 inhalation and 2 exhalation. That's why they have double respiration. The next point is during sleeping. When you are sleeping, respiration, breathing is minimum. You breathe minimum during sleeping. So these are the different facts we are discussing about the breathing, exchange of gases or the respiration. Now the most important, when we inspire, the diaphragm contracts and the muscles in between the ribs contract. That is called external intercostal muscle. And here diaphragm is characteristic feature of mammals, means this diaphragm is present only in mammals. Okay, and now the one more fact, we human beings breathe in through mouth as well as through nose, but horse can only breathe through nose. Horse can only breathe through the nose. And the one more fact about the elephants. Elephants, in human beings, the lungs are covered with a pleural membrane, double layer pleural membrane, and the space between the pleural membrane is covered with having a pleural cavity is filled with pleural fluid. But in elephants, that cavity has a loose connective tissue, a fibrous connective tissue. In elephants, pleural cavity is filled with tough connective tissue, and due to this quality or characteristic, we can say they do not have pleural fluid. Instead, they have a tough connective tissue filled in between the pleural membrane, that is pleural cavity. Due to this, elephant snores and withstand in a water upside the water and then down in the water without change or without rupturing of their blood vessels towards the alveoli. उनके alveoli के चारों तरफ जो blood vessels है वो rupture नहीं करती हैं due to change in pressure और blood pressure, क्योंकि body पानी के अंदर भी और पानी के बाहर भी easily survive कर सकती है because they have pleural cavity filled with a tough connective tissue. So now next interesting point is coughing. Why you cough? Coughing is actually a respiratory activity. Forced expiration, when you do forceful expiration, exhale out the gases due to some irritant, to expel out some irritation that occurs in your throat, is called coughing. It is forced expiration to expel the irritant. That irritant in your throat may be due to some infection or the dust particles. Next is hiccups. What is hiccups? In German language we say it a हिचकी. ठीक है? आपको generally कहा जाता है कि you are having hiccups means आपको कोई याद कर रहा है. No, this is a respiratory activity. It is a very jerky sound. It is a very jerky sound produced during inspiration. ठीक है? It is a jerky sound that produced during inspiration, that is called hiccups. But ये क्यों हो रहा है? Due to involuntary
contraction of diaphragm. अब कहोगे डायाफ्रेगम तो इनवॉलेंटरली ही कॉन्ट्रैक्ट करता है, बट फ्रीक्वेंटली करेगा, जल्दी से करेगा, ब्रीथिंग रेट से फास्ट करेगा, ओनली डायाफ्रेगम कर रहा है, इंटरकोस्टल मसल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही है, देन हिकअप्स एंड ऑल्सो क्लोजर ऑफ ग्लोटिस फ्रीक्वेंटली बाय एपिग्लोटिस. एपिग्लोटिस की वजह से क्लोजर हो रहा है किसका, फ्लैप दैट क्लोजेस frequently, and when both of these occurs it leads to hiccups. Next is snoring. What is snoring? Snoring means खराटे लेना. ऐसा क्यों हो रहा है बच्चे? अगेन it is a respiratory activity. It is a rough rattling inspiration sound due to vibration of vocal cords during sleep. ये क्या है? A rough rattling sound due to vibration of vocal cords vibrates during sleeping. सोते टाइम में हमें ऐसा होता है, ठीक है. एंड ड्यू टू partial blockage of the upper respiratory tract. It sometimes in some persons their upper respiratory tract, this one nasal cavity, pharynx or the larynx, get covered with the mucus and get partially blocked and leads to snoring. It occurs due to partial blockage of upper respiratory tract. Upper respiratory tract. Clear? Now the next one, yawning. थक जाते हो तो यॉन करते हो, कहते हैं कि yawning means आपको नींद आई. Actually when the body gets tired, जब बॉडी टायर्ड हो जाती है, बॉडी टिश्यूज टायर्ड हो जाते हैं, आप पूरा दिन से घर पे काम कर रहे थे या ऑफिस गए, जॉब स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे थे, you get tired, and when you get tired in biology means your body tissues work so hard, and after a hard work body tissues releases carbon dioxide, and that carbon dioxide get accumulate in the body. जब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज्यादा हो गई है तो आप क्या करोगे, a prolonged inspiration to get maximum air or the oxygen, to get oxygen because of high carbon dioxide in the body is called yawning. It is prolonged inspiration. Prolonged means एक लंबी सांस लेना. Due to a prolonged inspiration due to increase or accumulation of कार्बन डाइऑक्साइड इन लंग्स. ऐसा कब होता है? जनरली व्हेन योर बॉडी इज टायर्ड आफ्टर अ हार्ड वर्क एट द नाइट टाइम, बिकॉज योर बॉडी इज टायर्ड. आपकी बॉडी टायर्ड है तो इस वजह से क्या होगा, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जाता है क्योंकि बॉडी टिश्यूज ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किए. सो टू टेक अ मैक्सिमम ऑक्सीजन देयर इज अ प्रोलॉन्ग्ड इंस्पायरेशन नोन एज yawning. And let's move further with some more interesting facts about the next one is that hemoglobin in fetus has much more affinity for the oxygen, means fetal hemoglobin has more affinity to bind with the oxygen molecule, has much more affinity for oxygen than mother hemoglobin. Okay, it has much more affinity than the mother's hemoglobin. That's why so, because adult hemoglobin, or we can say mother's hemoglobin, has one hemoglobin molecule has 2 alpha chain and 2 beta chain, while fetal hemoglobin has 2 alpha and 2 gamma chains. Due to presence of gamma chains,
they have much more affinity for the oxygen. Clear? And next is myoglobin. Myoglobin is one of the protein present in a skeleton muscles, and it also have affinity to bind oxygen, has more affinity to bind ऑक्सीजन. ये भी ऑक्सीजन को बाइंड कराता है, बट it has only one polypeptide. You know, हीमोग्लोबिन के पास कितने पॉलीपेप्टाइड है? 4 पॉलीपेप्टाइड होने की वजह से एक 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है, बट इट बाइंड्स ओनली 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. It binds, have more affinity to bind oxygen. It has only 1 polypeptide chain, so it only binds 1 hemoglobin molecule. And due to this, जो इसका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये फैक्ट के साथ साथ बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दैट इज नीट. ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व फॉर मायोग्लोबिन इज नॉट सिग्मोइड. वो सिग्मोइड नहीं है, वो कैसा है? हाइपरबोला. ओके, हाइपरबोलिक शेप का होगा. एंड द अनदर फैक्ट इज दैट देयर इज अ वन कंडीशन, दैट इज एस्फेक्सिया. दिस इज एक्चुअली when there is low oxygen and high carbon dioxide. जब किसी की बॉडी में ऑक्सीजन कंटेंट कम हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बढ़ रहा है, तो हम उसे क्या कह रहे हैं? एम्फेक्सिया. अगर हम इसको अभी जो हमने टर्म्स पढ़ी टर्मिनोलॉजी में उससे रिलेट करें, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन इज हाइपोक्सिया एंड इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन इज हाइपरकैपिनिया. So, when both of these occur together, then it's known as amphyxia. Clear? And now the most important fact is carbon monoxide has much more, or we can say 250 times higher affinity to bind with hemoglobin. Irreversibly, the most important is irreversibly, hemoglobin molecules bind with oxygen reversibly and they get oxygen to the body tissues. Body tissues पे जाके वो ऑक्सीजन को डिसोसिएट करके ऑक्सीजन बॉडी टिश्यूज को दे रहे. बट ये इस कार्बन मोनोक्साइड की एफिनिटी 250 टाइम्स ज्यादा है ऑक्सीजन से. मींस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये बोथ आर प्रेजेंट इन एयर. कार्बन डाइऑक्साइड विल बाइंड विद द हीमोग्लोबिन एंड इन अ इररिवर्सिबल मैनर. और इररिवर्सिबल मैनर में मींस बाइंड हो रही है. वंस हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोक्साइड बाइंड हो गई तो वापस से ब्रेक डाउन नहीं होगी और वो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल दोबारा से कभी ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर सकेंगे. एंड इट्स एक्यूमुलेशन और कॉन्टिन्यूअस एक्सपोजर लीड्स टू डेथ और इमीडिएट डेथ. अगर ज्यादा कार्बन मोनोक्साइड हमने इनहेल कर ली तो ऑक्सीजन एफिनिटी बॉडी की कम हो जाएगी एंड इट लीड्स टू इमीडिएट डेथ. सो दीज आर द डिफरेंट फैक्ट्स दैट टुडे वी डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेटरी facts about the respiration. Thank you so much for watching the